बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ कॉग्निशन। कॉग्निशन मीन नोइंग, नॉलेज, जानना, इल्म हासिल करना। कॉग्निशन मीन्स एक्विजिशन, स्टोरेज, ट्रांसफॉर्म एंड यूज ऑफ नॉलेज। कॉग्निशियस mental activity like understanding, learning, etc. Cognition involves all processes by which the sensory input is transformed, reduced, elaborated, stored, recovered, and used. Attention, mentally focusing on some stimulus. Perception, interpreting sensory information to yield meaningful information. Pattern recognition, classifying a stimulus into a known category in recognizing the shape as something familiar. Memory, the storage, facilities and retrieval of information. Recall, cognitive processes are involved here too. Reasoning, using various strategies or techniques. Problem solving, your success or failure at any task may also depend on knowledge representation. Language, decision making. So students, cognition में या cognitive में attention, perception, pattern recognition, memory, reasoning, problem solving, language, decision making, all elements are included in cognition. कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी को समझने से पहले आप लोगों को पता होगा कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। सो हम जो दूसरा पार्ट है मेंटल प्रोसेसेस का, उसको समझने हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको हम कॉग्निटिव कहते हैं। सो अब हम इसको देखते हैं एज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। Cognitive psychology is the branch of psychology that studies mental process including how people think, perceive, remember and learn. As part of the larger field of cognitive science, this branch of psychology is related to other disciplines including neuroscience, philosophy and linguistics. The core focus of cognitive psychology is on how people acquire, process and store information. Cognitive psychology is concerned with internal mental states and its use scientific research methods to study mental processes. The scientific study of a human mind and information processing, including scientific study based on experimental method, empirical, scientific. Information processing में information comes from the environment, is stored briefly, some is selected for additional processing, जिसमें से हम कुछ को मज़ीद आगे उस information को बढ़ाते हैं. Something is done to it and it may result in some additional behavior, और कुछ को हम मज़ीद अपने किरदार में इस्तेमाल करते हैं उस information को जो हम हासिल करते हैं, जो processing करते हैं. अब हम देखते हैं इसकी definition. Cognitive psychology is a branch of psychology concerned with how people acquire, store, transform, use and communicate information. मतलब लोग नॉलेज जो है, इल्म जो है वो हासिल करते हैं, कैसे हासिल करते हैं, फिर वो उसको अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, फिर आगे ट्रांसफॉर्म करते हैं, और कैसे उसको अपनी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन के तौर पर एज अ कम्युनिकेटर जो नॉलेज हासिल किया जाता है उसमें लैंग्वेज भी शामिल है उसमें, और जब उसको एक्वायर करते हैं उसमें मेमोरी शामिल होती है. ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहलाती हैं. Cognitivism is the belief
that much of a human behavior can be understood in terms of how people think. सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है इसके ऊपर, इस टर्म में जो कॉग्निटिविज्म में इस्तेमाल होती है, वो ये है कि हाउ पीपल थिंक, लोग कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल परसीव, learn, remember and think about information. Cognitivism adopts a precise quantitative analysis to study how people learn and think, like behaviorism, emphasize internal mental process like gestalism. Cognitive psychology short history हम देखेंगे इसमें टॉलमैन work on cognitive maps, training rats in mazes, showed that animals had internal representation of behavior. Birth of cognitive psychology often dated back to George Miller's 1956, The Magical Number 7 plus or minus 2. Ulrich Nasser published Cognitive Psychology, which marks the official beginning of the cognitive approach. He used the term cognitive psychology. Some pioneer researchers like Gustav Fitchner, William Wundt, Edward B. Titchener, Hermann Ebbinghaus, William James, Wolfgang Kohler, Edward Tolman, Jean Piaget, Noam Chomsky, David Rumelhart, James Macklin, Vygotsky, etc. ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे काम किया है या कॉग्निशन से रिलेटेड काम किया है. अब हम देखेंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी की डोमेन्स क्या है, किन किन डोमेन्स में जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी काम करता है. कॉग्निटिव सबसे पहले है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस इज अ एकेडमिक फील्ड कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सबस्ट्रैक्ट्स अंडरलाइंग कॉग्निशन with specific focus on neural substrates of mental processes. It addresses the questions of how psychological cognitive functions are produced by neural circuits in the brain. Number 2 है attention, how we actively process specific information present in our environment. Perception is the organization, identification and interpretation of sensory information in order to represent and understanding the environment. Environment के माहौल से हम अपनी तवज्जो कैसे मरकूज़ करते हैं और अदराक कैसे करते हैं. अगर हम किसी की आवाज़ सुन रहे हैं, बहुत सी आवाज़ों में से जो हमसे रिलेटेड आवाज़ है, जिस पे हमने फोकस करना है, जिस पे हमने अटेंशन करनी है, फिर उसको परसीव करने के बाद, उसको आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, उसकी इंटरप्रिटेशन करने के बाद फिर हम उसको मीनिंग देते हैं. मेमोरी, अ प्रोसेस ऑफ रिट्रेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, and it is ability to use our past experiences to determine our future paths. Mental imagery, pictures in the mind are a visual representation in the absence of environmental input. Developmental psychology is the scientific study of how and why human beings change over the course of their life. Originally concerned with the infant and child, the field has expanded to include adolescent, adulthood, development, aging, and entire lifespan. Concept formation. Concept are categorization of objects, events, or people that share common properties. By using the concept, we are able to organizing complex notions into simpler and therefore more easily usable forms. Concept formation is the process by which we learn to form classes of things, events, people, and so forth. Human intelligence is the intellectual ability of humans, which is characterized by perception, consciousness, self-awareness, and volition. Intelligence enables humans and remember descriptions of things and use those descriptions on the future behavior. Artificial intelligence.
Artificial intelligence is the intelligence exhibited by the machines or software. It also the name of academic field or study which studies how to create computers and computer software and that are capable of intelligent behavior. Metacognition, the thought that a person has about their own thoughts, includes how number one how effect a person is at monitoring their own performance. Number two, a person understands of their mental processes. Number three, the ability to apply cognitive strategies and style. These all three elements are included metacognition. A person has about their own thoughts. Number one, performance. Number two, mental process. Number three, cognitive strategies जो वो अप्लाई करता है. नेक्स्ट है थिंकिंग, इसमें ये भी कॉग्निशन में शामिल होती है. हाउ वी थिंक, पैटर्न ऑफ रिकग्निशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज एंड लास्ट वन इज लैंग्वेज, आल्सो इंक्लूडेड इन डोमेन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. Trends in the study of cognition. Fields such as cognitive psychology, computer science, philosophy, linguistics, neuroscience, anthropology, recognizing their mutual interest, some came together to found an interdisciplinary field known as cognitive science. Cognitive neuropsychology, another approach to studying cognitive issues, comes from clinical work.